Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So today uh, I'm starting with the lecture 9. Okay. So lecture 9 of units and measurements chapter. So units and measurements. So this is the heading of the chapter, and this is lecture 9 as well as chapter 2. Chapter 2. We are going to see, my dear kids, हम क्या start करने वाले हैं? Concepts. Which concepts I am going to tell you now? Till yesterday we saw the concepts regarding ranges of masses, ranges of time. Now we are going to see uh, accuracy, precision of instruments, and errors in measurement. Okay. So my dear kids, accuracy, precision of instruments, and errors in measurement. We are going to see these concepts now. But our subject is physics, and this is class 11 NCERT. Class 11 NCERT physics. ठीक है? चलो. Good afternoon to everyone. Okay. So listen up, my dear kids. Before starting the definition of these terms, which are those terms? Accuracy, precision, है ना? And then errors. ये तीनों के definition start करने से पहले we are going to see the meaning of these in general terms. इनके general terms में meaning हम लोग देखना चाहेंगे. Because generally इसको कैसे समझा जाता है? How it will be understood? We are going to see now. Okay. So first we'll go to the accuracy. Accuracy के साथ जाते हैं हम लोग. तो accuracy क्या है? Basically, what is accuracy? Accuracy है क्या? We are going to see that. Because accuracy वो चीज है, somewhat it talk about the correct value. Okay, correct value. और एक टर्म इसको यूज कर सकते हो, exact value of the reading. आप जो भी रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, सो रीडिंग ऑफ व्हाट? रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना? सो एक्सपेरिमेंट का जो भी आप रीडिंग ले रहे हो, यू आर गेटिंग द वैल्यू. तो आप या तो उसको करेक्ट वैल्यू बोलोगे या तो एग्जैक्ट वैल्यू बोलोगे. ठीक. सो दिस इज कॉल्ड एज, कहते हैं ना, नियर अबाउट इट विल गिव द पिक्चर ऑफ एक्यूरेसी, नियर अबाउट मीनिंग. फिर भी एग्जैक्टनेस कुछ मिलेगा नहीं इससे. whatever we are seeing, correct value or exact value, with these we cannot define properly to the accuracy, है ना? तो इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं. सो व्हाट इज एक्यूरेट? एक्यूरेट क्या होता है? ठीक है. सो फिजिक्स इज फुल अप ऑफ कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट्स. फिजिक्स में क्या होते हैं? कंप्लीटली ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. सो व्हेनेवर यू आर हैविंग एक्सपेरिमेंट्स, यू विल बी हैविंग वैल्यूज. ठीक है. कंक्लूजन में क्या मिलता है आपको? वैल्यूज मिलते हैं. इन द रिजल्ट्स, into the experiments,
what you are getting the values, calculated values, है ना. तो ये जो calculated values है ना, ये calculated values कैसे मिलते हैं? by observing by observing the activities of the experiments. activities को आप observe करते हो, वो भी किसके, experiments के. you will take the readings. इससे आप क्या लेते हो, readings लेते हो. by taking these readings you just put up into the formulae में डालते हो, एक से ज्यादा हो या एक हो जो भी है. so after that you will take the calculation. तो calculation से क्या बनता है, result बनता है ना. तो ऑब्जर्विंग करके क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हो, एक्सपेरिमेंट से रीडिंग्स निकलते हैं, रीडिंग्स से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हो, देन उससे आप कैलकुलेशन बनाते हो, कैलकुलेशन से रिजल्ट्स बनाते हो. सो रिजल्ट से आपको क्या मिलेगा, यू आर गेटिंग द एक्यूरेट वैल्यूज, है ना. ये जो वैल्यूज मिल रहे हैं आपको, वो कैसे मिल रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यूज मिल रहे हैं. ठीक है. तो अभी ये एक्यूरेट वैल्यूज कैसे मिलते हैं सर. से फॉर एग्जांपल यू आर मेजरिंग द लेंथ. ठीक है. तो लेंथ को मेजर कर रहे हो, और लेंथ को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हो, वन पर्टिकुलर डिस्टेंस यू वांट टू मेजर, एंड यू आर टेकिंग 3 ट्रायल्स, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल. ठीक है. सो व्हेन यू आर मेकिंग 3 ट्रायल्स, आपको L1 मिला, फिर L2 मिला, फिर L3 मिला. 3 ट्रायल्स मिलने के बाद what you came to know, L1 plus L2 plus L3 तीनों को जोड़ा and you made divided by 3. इससे क्या मिला, length average मिला. So length average is nothing but the length of the quantity, particular quantity. So whatever we are getting the average value, that is called as accurate value. ठीक है. It is according to us. हमारे हिसाब से वो accurate value बन गया. ठीक है. तो अभी एक चीज पता चल गया कि एक्यूरेसी क्या होती है. एक्यूरेसी इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोर देन 3 ट्रायल्स, आइदर 3 ट्रायल्स और मोर देन 3 ट्रायल्स, है ना. उसको एक्यूरेसी कहते हैं हम लोग. ओके. सो we came to know that whatever we are getting the value after making average of 3 trials. So we are getting what, true value. हमें क्या मिल रहा है, true value we are getting. So those true values, L1 plus L2 plus L3, and we are getting L average, that is length, exact value. ये आपका क्या है, exact value है. है ना. कैसे, फॉर एग्जाम्पल L1 of particular, say for example ये rope है, the length of this rope is 1.3 meter in the first reading, and L2 the length is carrying somewhat 1.25 meter. Now L3 1.35 meter. Okay. So these are 3 lengths. तीनों को हमने क्या करा, ऐड करा, 1.3, 1.25, 1.35. Okay. So divided by 3, what we'll get, we'll get 1.3 only. ये आपका क्या मिल रहा है, L average मिल रहा है. Okay. So this is nothing but exact value. ये आपका exact value हो गया लेंथ का. Now we can call this as accurate value. हम इसको बोल सकते हैं कि this is accurate value. Okay. If another person come, this is measured by person 1, है ना. तो उससे क्या मिला, एक true value मिल गया. Another person come, person 2. So he will measure or she will measure the length, one trial, reading first trial by this person. कितना, 1.4 meter, 1.4 meter. For the second trial, he or she measures 1.42 meter. For the third trial,
it is 1.32 मीटर. ओके, सो ये 3 रीडिंग्स किसने लिए? पर्सन 2 ने लिए. नाउ व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ L1 विद द एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 1.3. ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू है आपका. तो ये कितना है? 1.3 है. तो इसको मैं क्या कहूंगा? आई विल कॉल दिस एज ट्रू वैल्यू. दिस इज ट्रू वैल्यू. ठीक है. एंड व्हेन यू आर मेकिंग डिफरेंस विद दैट, ये 1.3 बड़ा है या छोटा है? टेल मी, इज इट लार्जर और स्मॉलर कंपैरिजन विद दीज रीडिंग्स? 1.3, 1.4, and the sign you are going to keep in between is difference. Now again 1.3 difference 1.42, 1.3 difference 1.32. So what you are having the difference here? आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है? बड़े में से छोटा आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, 0.1 मिला. एंड 1.42, 1.42 कितना आ रहा है? 1.42 में से 1.3 को निकाला, कितना आ रहा है? 0.12. इज दैट, है ना? इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? एंड व्हाट अबाउट दिस वन? 0.02. सो व्हाट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल रहा है? What we are getting, tell me. So we are getting the difference, right? हमें क्या मिल रहा है? Difference मिल रहे हैं. कैसे difference मिल रहे हैं? You can see here. Okay, we are seeing the values. We are getting the differences. Yes. So these differences are nothing but these are called as errors. इसी को errors बोलते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Because the exact reading of this rope was कितना था? 1.3 मीटर था, है ना? लेकिन जब आपने पर्सन 2 से मेजरमेंट करवाया ऑफ दिस रोप, दैट पर्सन मेजर्ड इन अ वेरी रॉन्ग वे. सो फॉर द फर्स्ट रीडिंग ही फाउंड 1.4 ऑफ दिस रोप लेंथ as well as 1.42 as well as 1.32. तो जितना भी लेंथ इस P2 पर्सन ने मेजर करा, वो क्या आया? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आया. सो बाय दिस मींस वी केम टू नो दैट. क्या हमने जाना? हमने जाना कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं लेंथ में. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? सो जो डिफरेंस है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज एरर. उसी को हम एरर कहते हैं. एंड वट एवर द एवरेज वैल्यू वी कैलकुलेटेड, दैट इज नोन एज ट्रू वैल्यू. ओके, वो ट्रू वैल्यू है. सर, से फॉर एग्जाम्पल सर, वी हैव अ क्लॉथ. हमारे पास एक क्लॉथ है सर, और मैं इसको गिनना चाहता हूं या गिनना चाहती हूं. ओके, सो द लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ एंड दिस इज मीटर स्केल सर. ये आपका मीटर स्केल है. तो अगर ये मीटर स्केल है तो मैं गिनना चाहूंगी सर कि क्या मैं गिन सकती हूँ इसको करेक्टली? कैन वी मेजर सर? यस माय डियर किड्स, सी हियर आई एम मार्किंग आउट दोस थिंग्स. कितना लेंथ है ना? सो दिस इज योर मीटर स्केल. ये आपका मीटर स्केल है एंड यू आर टेकिंग द रीडिंग्स. नाउ listen up. How much it is? Near about exactly 4 मीटर. कितने का ये? 4 मीटर लेंथ का कपड़ा है, क्लॉथ. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज one reading, first reading. Okay, so we came to know that this is 4 meter. मैंने अंदाजे से ले लिया. But if you see here, you will come to know that there is a bit smaller difference in between the reading as well as scale. Scale बाहर आया हुआ है. Okay, so it means that the reading is lesser than 4 meter. So first reading I have taken as I have taken it as 4 meter. For the second one, it is, say for example, 3.8 meter. For the third reading, it is 3.9 meter. Are you getting my point, my dear kids? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Okay, for the मतलब हमने जब भी रीडिंग लिए इतना आया. So what we are going to do? We are going to add. हम लोग ऐड करेंगे
तीनों के तीनों, दैट इज लेंथ ऑफ द क्लॉथ, है ना। लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितना है, L1 प्लस L2 प्लस L3 टू फाइंड आउट व्हाट, ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 कितना है बताओ, 4 प्लस 3.8 प्लस 3.9 प्लस ये कितना आया 11.7 डिवाइडेड बाय 3, ओके। सो डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, दैट इज 3.9। सो ये आपका क्या हो गया, you got this, so this is 3.9. So 3.9 is nothing but this is your true value. Now when you're taking the difference between all these three readings up 3.9 से, you'll come to know that the LC difference L1 कितना आया, that is 0.1, LC difference L2 कितना आया, again you are getting 0.1. I'm not going to take plus 1 minus 1 plus 0.1 plus minus 0.1 मैं नहीं ले रहा हूं. I'm not going to explain that thing here, but afterwards I will tell you वो क्या होता है, okay, types of errors में. So basically इतना मैं समझाना चाहता हूं कि in the larger size we are removing the smaller size, बड़े में से छोटा निकाल रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं. So LC difference L3, because if you see here first reading L1 is greater than LC, तो L1 में से LC निकाला यहाँ पे. Here if you see LC is greater than L2, so LC में से L2 को निकाला. So in both things we are getting the same difference, and LC and L3 both are equal, okay. So what we are getting the difference 0. So the error what we are getting here in the third reading में क्या मिल रहा है हमको, we are getting zero error. यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कम है, तो हो सकता है इसको मैं माइनस एरर मींस नेगेटिव एरर बोलूं, ओके. एंड इफ द वैल्यू इज इंक्रीजिंग हियर विद द L1, तो मैं इसको हो सकता है कि बोल सकता हूं पॉजिटिव एरर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या सो आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ क्लॉथ, but basically physics में in the books they have taken an example of vernier caliper, screw gauge, instruments. लेकिन मेरा पर्पस था, my purpose was to take the common example, डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हो ना, उसका एग्जांपल लेके बताना था, ठीक है. because complication it makes more complication anyhow. Now in general I have explained you what do you mean by error and what do you mean by accurate value or accuracy, है ना. क्या clearly समझ में आया है? If it is, I will move to the precision value. Okay. So this is your concentric circle. ये क्या है? आपका concentric circle है. Another circle we are drawing inside that circle, है ना? As well as the third circle. So 3 circle I have drawn till now. The fourth circle I am going to draw inside of these 3 concentric circles. मैं और एक चौथा circle बना रहा हूँ. So after this I will put a dot. मैं एक dot बनाऊंगा. Fine. Now if you see the first ring and if you see the second ring, if you see the third ring,
इफ यू सी द फोर्थ रिंग, ठीक है, चारों रिंग्स देखे आपने, एंड फ्रॉम दिस साइड आई एम गोइंग टू शो यू द रेड डॉट. दैट रेड डॉट इंडिकेट्स द accurate value. मीन्स यू आर टेकन सम मेजरमेंट, आपने एक मेजरमेंट लिया है किसी भी रीडिंग का, एंड यू गॉट द एक्यूरेट वैल्यू समवेयर अराउंड, से फॉर एग्जांपल 4 यूनिट्स, आपका 4 यूनिट्स वैल्यू आया है, ओके, एंड द 4 यूनिट्स इज दिस वन. एवरेज बना के, चार रीडिंग्स का एवरेज बना के, मीन्स L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू कुछ 4 यूनिट्स आया है, से फॉर एग्जांपल, ओके, so that 4 units is this one, but L1 reading is, say for example, 4.1 आया है, second one is say for example 4.3, the third one is say for example 4.7, the fourth one is 4.9. So we have 4 readings here. So when you are comparing all these 4 readings, 4 trials readings with the original one, कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 डिफरेंस 4.1 is 0.1, एंड द लास्ट वन का कंपेयर करो, 4 डिफरेंस 4.9 is कितना आ रहा है, यू आर गेटिंग 0.9. सो या विच वन इज द हाईएस्ट वन, इसमें दोनों में से कौन सा ज्यादा है, बताओ मुझे डिफरेंस, टेल मी क्विक. लार्जर डिफरेंस इज दिस वन, यही है ना ज्यादा डिफरेंस, ये छोटा डिफरेंस है, या so which is the higher difference, it is less accurate, means the precision is less, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस है तो प्रिसीजन लेस रहेगा क्योंकि एक्यूरेसी कम रहेगी, एंड विच वन इज हैविंग लेस डिफरेंस, यहां पे क्या रहेगा, मोर एक्यूरेसी रहेगी, इट मींस प्रिसीजन इज मोर. इज इट क्लियर माय डियर किड्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रिसीजन इज मोर विद द फर्स्ट वैल्यू, मतलब ये वाला रीडिंग जो है ना, फर्स्ट रीडिंग, दिस इज हैविंग स्मॉल डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस है दोनों रीडिंग्स के बीच में, सी हियर स्मॉल डिस्टेंस, एंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग द लार्ज डिस्टेंस विद द फोर्थ वन, यू आर फाइंडिंग दैट यहां पे दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, सो इट मींस दैट द फोर्थ रीडिंग इज एररफुल रीडिंग, ज्यादा एरर है, फर्स्ट रीडिंग इज लेस एरर रीडिंग, है ना, तो जहां पे कम एरर रहता है वहां पे प्रिसीजन ज्यादा रहता है, मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज मोर, एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक नजदीक का वैल्यू एक्यूरेसी, मतलब उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, वो एक्यूरेट ही कंसीडर किया जाता है, एंड इफ द एक्यूरेसी इज फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल रीडिंग, इट विल बी कॉल्ड एज लेस एक्यूरेट वैल्यू, है ना, तो उसको लेस प्रिसीजन माना जाएगा. ज्यादा प्रिसीजन किसको माना जाएगा, फर्स्ट वाले, व्हेन यू आर थ्रोइंग, क्या कहते हो, एक पिन थ्रो करते हो, एरो पिन थ्रो करते हो ऐसे किसी क्या बोलते हो टारगेट पे, सो इफ इट रीचेस एंड हिट्स हियर, वो अगर जाके यहाँ पे हिट करता है, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द टारगेट, इफ इट हिट्स हियर मींस इट इज एग्जैक्ट, है ना, इफ इट हियर समवेयर हियर मींस इट इज नियर टू टारगेट, अगर यहाँ पे हिट कर रहा है तो बहुत दूर है ना, so this is called as less precision, this is called as more precision, yes. So the general idea I gave to you regarding accuracy, precision and errors. Now listen up dear kids, I'm going to tell you the definitions of, first of all, error. Error का definition बताना चाहूंगा. So what is error? The uncertainty in every measurement, the uncertainty in every measurement is called as error. ये this is one definition, ये आपका one definition है, ठीक है. Now the second definition, or it is the difference between it is the
difference between, it is the difference between the measured value and true value. True value of physical quantities. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हो, से फॉर एग्जांपल यू आर टेकन अ मास, ठीक है. नाउ से फॉर एग्जांपल दिस इज हैविंग 10 kg ऑफ मास. इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 10 kg ऑफ मास. सो इसको पर्सन वन आके क्या करता है? द पर्सन वन कम्स and he used to measure the mass of this over the common balance. So 9.9 kg आया. The second person, he is measuring 10.1 kg. Means the first person, again he is taking the second trial, he is measuring the 10.1 kg. The third one, again he is measuring the third, means the third trial, he is measuring 10 kg. So overall 3 trials the first person has been made. So when he is comparing, तो पहला वाला कंपैरिजन किया, एक अनसर्टन वैल्यू आया. क्या आया? द डिफरेंस ऑफ 0.1, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज एरर. तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, द अनसर्टेनिटी इन एवरी मेजरमेंट. तो एवरी मींस पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला. सो सी हियर नाउ 10.1 यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे भी 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना. बट 10 डिफरेंस 10 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. सो दिस इज कितना? 0 kg मींस नो एरर, नो एरर. क्लियर? सो इसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं. फाइन. एंड दिस इज कॉल्ड एज एरर. ओके. सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एरर. एरर क्या है ये भी एक्सप्लेन किया. और एक्यूरेसी का डेफिनेशन बनाते हैं. एक्यूरेसी. फाइन. सो द एक्यूरेसी ऑफ अ, द एक्यूरेसी of a measurement, the accuracy of a measurement is a measure, is a measure of how close, how close the measured value, measured value is to the true value of the quantity, है ना. This is one definition. And the another definition is uh, the closeness of, the closeness of a measurement, the closeness of a measurement to the true value is called as accuracy. इसको क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं. वेट, स्पेलिंग को सही ढंग से लिखते हैं, ठीक. सो टू डेफिनेशंस आई मेड फॉर द एक्यूरेसी. मतलब जो क्लोजनेस रहेगा उसी को एक्यूरेट कहा जाएगा. फॉर एग्जांपल, आई विल कीप द एग्जांपल ऑफ हियर. से फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक बंदा है, ओके. एंड व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, ये बंदा क्या कर रहा है? वेट, वेट. व्हाट ही इज डूइंग? ही इज ट्राइंग टू रन. ये बंदा दौड़ने की कोशिश कर रहा है. So this person is running.
इन विच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है ना। सो इफ दिस पर्सन इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन, तो करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट ही वांट्स टू डू, यू आर पुटिंग अ टाइमर, आप टाइमर सेट कर रहे हो, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। यहां से आपने यहां तक क्या कर दिया, टाइम सेट कर दिया, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, सो इनिशियल पॉइंट एज वेल एज फाइनल पॉइंट। सो व्हेन दिस पर्सन इज रनिंग, ये बंदा जब रन कर रहा है, how much time he is taking to cover this distance, say for example 2 minutes 30 seconds, again आगे का 11 digits का ये नंबर है, ठीक है, 2 minutes 30 seconds और आगे का ये डेसिमल नंबर है, जो भी है, मतलब सेकंड का 11वां हिस्सा, ठीक है। बट दिस इज एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में है, फाइन। एंड फॉर द सेकंड अटेम्प्ट कितना टाइमर लगा रहा है, अगेन ही इज रनिंग इन द सेकंड अटेम्प्ट, व्हाट वी आर गेटिंग नॉट द सेम वैल्यू, हम सेम वैल्यू नहीं मिल रहा है हमको, कितना आ रहा है, नाउ इट इज से फॉर एग्जांपल ये वाला हटा देते हैं वरना दिक्कत हो जाएगा। सो 2 minutes and 30 seconds हुआ, फॉर द सेकंड अटेम्प्ट ही इज मेकिंग 2 minutes 25 seconds, ये मिनट है और ये सेकंड है, ठीक। एंड for the third attempt, for the third attempt for the third attempt 2 minutes again 30 seconds, see here, if you find out the difference, ये तीनों का एवरेज बनाओगे और डिफरेंस देखोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। सो विच वन इज द मोर एक्यूरेट विद द एवरेज वन, एवरेज वन के साथ कौन सा वाला ज्यादा एक्यूरेट है, द नियरेस्ट पॉसिबल नंबर। अभी समझो फोर्थ अटेम्प्ट करता है, say for example fourth attempt, okay, and in the fourth attempt he will cover the distance within 2 minutes 27 seconds, ठीक है। and when you are making the average of these three, और आपको जो मिल रहा है it is somewhere around, कितना मिल रहा है, कैलकुलेट करो, फट से करो, 2 minutes 30 plus 2 minutes 30 plus 2 minutes 25 divided by 3, 228, ठीक है। So 228. So possible nearest value is 227, है ना। तो which one is the accurate one? The accurate one is the fourth attempt. So this is what is called as accuracy. इसी को accuracy कहते हैं, because this is average one. So we used to consider it as a true value. इसको हम true value बोलते हैं. Okay. When you are taking the reading with the fourth attempt, you are comparing with the true value. You are finding that less amount of difference is coming while calculating the quantity. तो कौन सी वाली क्वांटिटी, टाइम वाली क्वांटिटी। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम 2.28 लगता है, तो नियरेस्ट कौन सा आ रहा है, 2.27 आ रहा है, नियर द 2.28, तो दिस वन इज द एक्यूरेट वन, तो ये वाला एक्यूरेट है। इज इट क्लियर माय डियर किड्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, 2.28 और डिफरेंस 2.27 कितना आएगा बताओ आप, 0.01 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, तो लेस एरर आ रहा है एंड मोर एक्यूरेसी आ रही है, मोर एक्यूरेसी। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द टाइम, है ना। यस इट इज क्लियर। नाउ द प्रिसीजन, प्रिसीजन वाला आइडिया क्या है। सो प्रिसीजन, व्हाट इज प्रिसीजन, तो प्रिसीजन इज, यू नो माय डियर किड्स, it tells us to what resolution or limit
the quantity is measured. So whichever quantity you want to choose, you can choose. आप choose कर सकते हो, किसी भी तरह की quantity को आप choose कर सकते हो. And up to what extent you can measure the quantity, आप किस हद तक exact value को आप क्या कर सकते हो, measure कर सकते हो. So that is called as precision. मतलब कहां तक आप किसी भी चीज को measurement ले सकते हो, that attempt is called as precision. It may be near to precision, or it may be near to accuracy, or it may be farther from accuracy. तो एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है या एक्यूरेट वैल्यू से कम भी हो सकता है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट भी हो सकता है, कम भी. So listen up dear kids. uh, we were talking of what, we were talking of precision, है ना. तो कहां तक हम लोग किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं. नाउ say for example, now this is one thing, and ये आपका और एक सर्कल. Now listen up. Here is the, at the center of these two concentric circles, इस concentric circles के center पे, यहाँ पे consider it as a true value. ठीक है. ट्रू वैल्यू क्या है, ये आपका रीडिंग है, एग्जैक्ट रीडिंग है. ठीक है, एग्जैक्ट रीडिंग. सो से फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू कितना है, x है. एंड व्हाट अबाउट दिस वन, फर्स्ट रीडिंग, एंड दिस इज सेकंड रीडिंग. ठीक है. तो any instrument you have taken, say for example any instrument you have taken, and the value is x. कोई भी क्वांटिटी का एक आपने क्वांटिटी लिया है, and you are taking the measurement of that quantity, and say for example here is the value, that is x value. uh, Consider that one cloth you have taken, and you are taking a measurement with a meter scale. आप मीटर स्केल से क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो. तो वो कितना आ रहा है, see here, if you see properly, I'll show with a different color meter scale. आपने मीटर स्केल को सेट कर दिया एक जगह, एंड यू आर टेकिंग द रीडिंग ऑफ द स्केल. ठीक है. तो मीटर स्केल इतना आ रहा है, एंड द क्लॉथ इज अ बिट स्मॉलर व्हेन इट कंपेयर्ड टू द क्लॉथ. तो मतलब कपड़ा 1 मीटर का नहीं है. ओके. बट द वैल्यू ऑफ द कपड़ा इज समवॉट x, बट यू आर गेटिंग द वैल्यू फॉर द फर्स्ट रीडिंग कुछ और, एंड फॉर द सेकेंड रीडिंग that is different. So the portion of this one, the portion of this reading, कौन सा वाला portion, ये वाला, you are not getting the value, उसका value नहीं मिल रहा है. मतलब beyond this measurement with the meter scale we are not possible to measure that quantity. ये वाला quantity हमको measurement करने नहीं आ रहा है. Up to that extent only you can measure, up to that resolution, up to that limit only you can measure the स्केल ऑफ द क्लॉथ. उससे आगे बढ़कर आप नहीं कर सकते. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सो फॉर द फर्स्ट रीडिंग एंड फॉर द सेकेंड रीडिंग वी आर टेकिंग मेजरमेंट्स. हम लोग मेजरमेंट्स ले रहे हैं, और हम लोग नहीं ले सकते उसके आगे, उसके आगे हम लोग नहीं ले सकते. आइदर इट मे बी स्मॉलर और इट मे बी लार्जर. लार्जर हो तो आप स्केल रखते हुए जा सकते हो, बट इफ द क्लॉथ इज स्मॉलर मींस वी कैन नॉट टेक दैट मेजरमेंट. उतना पार्ट का हमें मेजरमेंट करने के लिए नहीं आ रहा है. से फॉर एग्जांपल, आर यू गेटिंग? सो 10 रेज टू 3 इज द 10 रेज टू 3 इज द किलो, है ना. तो 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू, जैसे किलो है ना, वैसे सेंटी कैसे होता है, 10⁻². सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻², मीटर, है ना. मतलब वेट, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻² मीटर रहता है. मीन्स दिस इज सेंटी.
तो आप लोग क्या करते हो, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर्स में रखते हो. बट व्हेन इट कम्स टू द लेस क्लॉथ, तो वो कितना है? से फॉर एग्जांपल इफ इट इज होल नंबर, मान के चलो 5 सेंटीमीटर कम है, 5 सेंटीमीटर. सो यू कैन से दैट 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब 95 सेंटीमीटर is the length of cloth. But the if you even go into small resolution, बहुत ही छोटे resolution में गए, so the length is somewhere in between 95 and 96 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में कहीं पे है. तो that measurement you cannot take. You can whole and soul you can say that 95 है या 96 है. अगर इन दोनों के बीच में है, so it is difficult with the meter scale. तो आपका जो ऑर्डर है ना, वो इससे नीचे जाएगा 10⁻⁻4 ऑर्डर में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और एल्स 10⁻³ के ऑर्डर में. बट दैट स्केल इज नॉट प्रेजेंट हियर. वी हैव ओनली 10⁻² ऑर्डर वाला स्केल है. तो डिग्री ऑफ प्रिसीजन विल बी अप टू 10⁻². डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विल बी अप टू 10⁻². तो आप यहीं तक जा सकते हो, आप यहीं तक जा सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते. टुवर्ड्स द करेक्टनेस, टुवर्ड्स द perfect value. So this is called as degree of accuracy. So first reading is depicting more accurate. Second reading is depicting less accurate comparison with the x value. तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रिसीजन ज्यादा कौन सा है? फर्स्ट रीडिंग. सेकंड रीडिंग प्रिसीजन कम है. तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को इंडिकेट करने के लिए सेकंड टर्म यूज किया जाता है, प्रिसीजन. इट टेल्स अस टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड. बस यही है. Okay. So, wait, I'm going to share a new page. So this is over. Now, we are going to see. Okay. So we saw errors. We saw errors. Now we are going to bifurcate errors into two types. दो types में हम errors को क्या करेंगे? Bifurcate करेंगे. Systematic errors. The second one is random errors. ठीक है. Listen up, my dear kids. I'm not going to define the definition of these errors. Brief idea दे दूंगा मैं आपको. Not now. In the next class, I'm going to define the definitions. क्योंकि थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको before explaining those things, before defining those things. Okay. So systematic error contains three types again. It contains three types. इसमें तीन types होते हैं. So which are those? The first one. The first one is instrumental error. ठीक है. Instrumental error. The second one, imperfection. Method of calibration. Third one, personal error. Now, I'll go with the first of all, personal error से मैं आपको start करूंगा. Now, when you are taking the readings, L1 का आप लेते हो somewhat 3.3, L2 का लेते हो 4.2, L3 का कुछ लिया, कुछ value आया 2.8. Okay. So whatever, these are complicated things, right? तो इनको मैंने ऐड करा. कितना ऐड करा? 3.3, 4.2, 2.8. ठीक है ना? कितना आ रहा है ये? So this is 13. Decimal point रखा 7, 10, 10.3 divided by 3. So 10.3 is the correct one, right? We all know that. तो मैंने एवरेज लाने के लिए डिवाइडेड बाय 3 किया. चलो कोई दिक्कत नहीं. अगर मैंने 10.3 के बजाय instead of taking 10.3, if I take 9.3, I'm taking the wrong value on the basis of me only. मैं अपने आप से गलत लिख रहा हूं यहाँ पे. So this is called as personal error. इसी को personal error बोलते हैं.
सर नहीं सर, मैंने 10.3 करेक्ट लिखा, अगर मैंने यहाँ पे नीचे 2 लिया, दिस इज ऑल्सो पर्सनल एरर कैटेगरी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट माय डियर किड्स? सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ पर्सनल एरर्स. तो पर्सनल एरर्स क्या है पता चल गया आपको? रॉन्ग कैलकुलेशन और टेकिंग द रॉन्ग रीडिंग्स. सो 3.3, 4.2, ये 4.2 है नहीं है, से फॉर एग्जांपल दिस इज 3.2 बट यू हैव चोजन 4.2, आपने 4.2 गलती से लिखा, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पर्सनल एरर. ठीक है ना? सो दीज मिस्टेक्स वी आर मेकिंग, राइट? हम लोग ये गलतियां कर रहे हैं. या नाउ imperfection method of calibration. ये calibration क्या होता है सर? Calibration is, you know, taking the direction, taking the direction, taking the reading direction. कोई भी रीडिंग आप ले रहे हो, उसका डायरेक्शन ले रहे हो, उसमें आपने गलती से कुछ इम्परफेक्टली, मतलब इम्परफेक्ट तरीके से रीडिंग्स को लेने की कोशिश की. से फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू नाउ, यू आर टेकन अ 50 मीटर क्लॉथ, 50 मीटर का क्लॉथ लिया आपने, एंड यू आर टेकिंग अ मीटर स्केल, आपने मीटर स्केल लिया, एंड यू आर अटेम्प्टिंग दैट कि मेजरमेंट करते हुए जा रहे हो मीटर स्केल से. यू आर सेइंग दैट यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया. ठीक है, ये बहुत अभी लंबा है, समझ लो. से फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी मच लेंदी. कितना? 50 मीटर का. सो 1 मीटर लिया, 2 मीटर लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो 12 आने के बाद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया. ठीक है, so you are getting confused. Again you are coming back here, from here again you are measuring, and you are thinking that this is 10 meter. Instead of taking 11 you are taking this as 10. फिर से यहाँ से attempt किया, मतलब आगे बढ़ रहे हो. You are moving further in the forward direction. Okay, by going from 12 to 11 you came back, वापस आ गए. मतलब क्या किया आपने? What you committed the mistake? You gone in the wrong direction. आपने क्या किया? गलत डायरेक्शन में गए. So what happened? यहां तक आके आपने wrong direction लिया, then again you are returning back in the same direction. आपने same direction में फिर से चलना शुरू किया. ठीक है, so from here but taking wrong value. ठीक है, so इससे क्या हुआ? एक confusion create हुआ इस portion में. So that is called as imperfection method of calibration. measurement का गलत तरीका. If you are moving in the front direction while taking the reading, you should move in the only single direction. You should not come back. आपको फिर से वापस नहीं आना है. Only after reaching the 50 meter का end पे, if you are reached a 50 meter after taking the measurement and the कितना measurement आ रहा है? 49 आ रहा है. But you are saying sir the cloth is having the length of 50 meter. लेकिन मैंने measurement करा, कितना आया? 49 आया. तो तब क्या करोगे? फिर से measurement लोगे. So this is first trial. सेकेंड ट्रायल भी करोगे, थर्ड ट्रायल भी करोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि यार 50 मीटर है. आपको पता लगेगा कि 49 आ रहा है, तो मैंने कहीं पे गलती किया. किस वजह से गलती हो गई? इम्परफेक्शन मेथड ऑफ कैलिब्रेशन. तो मैंने आगे बढ़ा, फिर पीछे आया, देन अगेन बाय प्रिडिक्टिंग रॉन्ग वैल्यू 11 को 10 बोला, 10 से आगे बढ़ गया फिर से, मतलब मैंने एक वैल्यू को घटा दिया. इज दैट करेक्ट माय डियर किड्स? दिस इज कॉल्ड एज इम्परफेक्शन मेथड ऑफ कैलिब्रेशन, है ना? यस. नाउ apart from this instrumental error आता है. Instrumental error, what is instrumental error? Yeah, instrumental error means, say for example, uh, to take the measurement you are taking a meter scale. So we all know that 1 meter is equals to 100 centimeter. Okay, this is exact value. 1 meter को 100 centimeter में conversion किया जा सकता है. But when you measure over the scale, when you take the measurement over the scale, you'll come to know that this is not 100 centimeter. This is 96 centimeter वाला scale है originally. When you are taking another meter scale and you are comparing with the first meter scale, आपने पहले meter scale के साथ compare किया,
कौन सा, और एक मीटर स्केल लाके, और पता चला कि आपका जो पहले वाला स्केल है वो कितना है, 96 है, तो फिर दूसरा वाला कितना है, 100 है। ये 96 कौन सा है, रेड वाला है, द ब्लैक वन इज 100 सेंटीमीटर। नाउ यू केम टू नो दैट, अरे यार ये तो गलत है वैल्यू, बट द प्रिंट वॉट एवर पुट, मतलब वो जो स्केल पे जो प्रिंट किया हुआ है, जो भी हमको प्रिंट मिल रहा है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद द अदर स्केल, वी आर कमिंग टू नो दैट कि यार ये वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है और सेकंड वाला सही है। सर ये फर्स्ट सेकंड में कौन सा वाला सही है, हमको कैसा पता चलेगा सर, हाउ विल कम टू नो दैट? यू हैव टू टेक अनदर स्केल, कंपैरिजन करते वक्त और एक स्केल लेना है, 3 तो होने चाहिए जिसमें पता चलेगा कि यार ये सही है। सर अगर ये दोनों गलत हो तब क्या करोगे, तब और एक स्केल ले लो। सो बाय टेकिंग मोर ट्रायल्स यू विल कम टू नो दैट कि कौन सा वाला सही रीडिंग है। सो नाउ 3 रीडिंग्स आर करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या पता चल रहा है, बाय सीइंग दिस थिंग वी आर, यहां से लेके यहां तक ये तीनों स्केल सही है, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग वन, है ना। तो फर्स्ट वन कितना है, 96 सेंटीमीटर है, तो तीनों के तीनों 100 सेंटीमीटर है, मतलब 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है विद द फर्स्ट स्केल। वी केम टू नो दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मिसप्रिंट हुआ है स्केल पे, या सो दिस इज सिस्टमेटिक एरर। सर गिव मी वन एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर, रैंडम एरर का कुछ एग्जांपल दीजिए, ये रैंडम एरर क्या होता है? Random error is one which you know that error appears randomly, पता ही नहीं चलेगा रीजन। मींस मैंने बोला ना, किसी भी चीज का आप मेजरमेंट कर रहे हो, समझो कितना, यू आर टेकिंग द वेट ऑफ समथिंग ओवर द कॉमन बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 kg का पत्थर रखा, एंड हियर हियर यू आर गिविंग समथिंग, से फॉर एग्जांपल पल्सेस बेच रहे हो आप, ठीक है। on this side this is 1 kg stone, ठीक है, and on other side pulses बेच रहे हो, and when you take this pulse after weighing on the machine, you will come to know that this is 1.2 kg, 1.2 kg, but the instrument is correct, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ जगह गलती हुई है, पकड़ने में हो या रखने में हो, बट वी आर नॉट गेटिंग वेयर दिस एरर इज ऑकरिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। सर ये 1.2 kg है, कैसे पता चलेगा? व्हेन यू टेक दिस टू योर होम, से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अनदर फिजिकल बैलेंस, तो यहाँ पे 1 kg रखा और 200 ग्राम भी रखा, तो ये चीज इधर डालने के बाद क्या पता चल रहा है, वी आर कमिंग टू नो दैट दिस इज 1.2 kg। तब पता चलता है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं एरर था यहाँ पे, लेकिन कहाँ था पता नहीं, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। So is it clear, my dear kids? Any doubt regarding the content, today's content? So क्या सारे doubts clear हो गए बच्चों के? Yes. Thanks a lot. अगर आपको सभी को समझ में आया ये चीजें, and thanks for sitting patiently, my dear kids. So I'm going to close this class. Okay. So if you like this video, you can go and comment into my YouTube channel. ठीक है? So this is lecture 9 over the errors, accuracy and precision of physical quantity. Fine. Thanks. Jai Hind.